up. It's you. So what's the format of my little speech? How long should I speak? 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. Okay. And okay. And there will be Hindi translation, or should I speak straight in English? What do you prefer? It doesn't matter for me, whatever is. Yeah, translation. Yeah. Yeah. Translation would be appreciated by the audience. In this way, I will also learn little Hindi in the meantime. आप हिंदी में बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा बीच में. कुछ हिंदी बोल सकता हूँ, पूरा नहीं. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नमिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनाय कपिधरो कमलाय दक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं सञ्जीवयते किल शक्तिधरः स्वदं नन्यंश्च हस्तचरणा. श्रवणात् वागादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. स्वस्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यान्तु भूतानि शिवं मिथोदिय. मनश्च भद्रं भजता तदोक्षजयवेश्यतं नवमतिर्आप्यायतु की. So I'm immensely grateful to Param Puja Lokanath Maharaj for inviting me to this August assembly, to this session on the glories of the holy name. महाराज जी कह रहे हैं उनका परम सौभाग्य है और वे महाराज जी के परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं कि महाराज जी ने उन्हें ये संधि दी कि आज हम सभी के बीच उपस्थित होकर महाराज जी हरि नाम के विषय में कुछ बातें हमसे कर सकते हैं. तो इसके लिए हम परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज का आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं. I feel very humbled to speak in his presence and in the audience consisting of his disciples, but on his order I will try to speak something and hopefully it will be worthwhile. महाराज जी की उपस्थिति में बोलने के लिए थोड़ा सा संकोच हो रहा है, विशेष रूप से महाराज जी के शिष्यों के बीच आकर महाराज जी बोलने में थोड़ा संकोच महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि महाराज का आदेश है तो आदेश का पालन करते हुए महाराज जी अब हमें कुछ सुनाएंगे. So I will speak a little bit on the 10th offense of the holy name, which is the most subtle and most persistent offense among all other offenses. तो आज हम 10 नाम अपराधों के विषय में चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे जो कि बहुत ही सूक्ष्म है और जो हम दोहराते रहते हैं हमारे जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में. तो इन अपराध या इन 10 नाम अपराधों के विषय में हम चर्चा करेंगे. We all know that in the chanting of the holy name, the most important consideration is to avoid offenses. The process of the chanting of the holy name is very easy, but technically it's very easy. But internally it's not easy because there are so many internal obstacles on this path of the chanting of the holy name. जैसे हम सब जानते हैं कि हम जब हरि नाम लेते हैं या नाम जप करते वक्त 10 नाम अपराध या जो अपराध है उनसे बचना अति आवश्यक है.
वैसे तो अगर हम देखें तो हरि नाम लेना बहुत ही आसान है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उसे सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो अत्यधिक कठिन है, क्योंकि हमें इन अपराधों से बच के या इन अपराधों को न करते हुए भगवान के दिव्य हरि नाम का जप करना है। These internal obstacles are basically connected with our outlook of the world. And this outlook of the world, Srila Prabhupada, innumerable times you say that our general attitude towards the world, I'm the controller, I'm the enjoyer of this world. इनका जो आंतरिक एक संबंध है इन अपराधों का, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो महाराज बता रहे हैं कि हमारी जो प्रवृत्ति या हमारा जो नजरिया है इस भौतिक संसार को देखने का, उससे निर्भर करता है या उससे संबंधित है। और मूलतः श्रील प्रभुपाद बहुत सारी जगहों पर ये बात समझाते हैं कि हम इस भौतिक जगत को किस प्रकार देखते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हम इस भौतिक जगत के भोक्ता है और हम स्वामी है इस भौतिक जगत के। तो इन अपराधों का उद्गम स्थान लगभग इस भाव या इस विचारों से संबंधित है। So this Bhakta or Swami attitude towards this world, it's basically description of our egocentric position. We place ourselves in the center of the world, and everything which is happening around us is only relevant as much as it is related to us. So this attitude is aparat in itself. तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में हमारा जीवन जीते हैं, जहाँ पर हम स्वयं को केंद्र बिंदु रखते हैं इस पूरे संसार का, और जो भी गतिविधियां हो रही है उसमें हम स्वयं को अपने आप को केंद्र बिंदु मानते हुए चलते हैं और अपना स्वामित्व रखते हुए चलते हैं, और अपने आप में यही एक बहुत बड़ा अपराध है। Yes, अपने आप ये वही बहुत बड़ा अपराध है। Just recently somebody asked me, how do I know which aparat I commit? I know that I commit some aparat, but consciously I don't commit any aparat because I'm not offending the devotees, I'm not offending the spiritual master, I'm not making some sinful activities on the strength of the holy name. I'm avoiding all these things, but how do I know still some apparat is there? What is this apparat? तो हाल ही में महाराज जी से कोई पूछ रहा था कि मैं ये कैसे जान सकता हूँ मैं क्या अपराध या कौन सा अपराध कर रहा हूँ। मैं भक्तों का अपराध नहीं कर रहा, मेरे गुरु महाराज का अपराध नहीं कर रहा हूँ, और कोई पाप कार्य भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे जान सकता हूँ ये अपराध क्या है और मैं क्या अपराध कर रहा हूँ। So this apparat, which is, as I said, is constantly present within us in the form of the seed, is this tense apparat. And from this tense apparat, as from the seed, the whole plant grows. So all other apparats, they're growing from this egocentric attitude towards the world. जैसे महाराज जी ने हमें बताया कि हमें इस भौतिक संसार में जो हमारा भाव है स्वामित्व का या प्रभुत्व का या स्वयं को भोगी मानना, तो सारे अपराध इसी भाव से प्रकट होते हैं, और जो 10 अपराध है वो लगभग एक समान से बीज के रूप में हमारे हृदय में स्थित है, और बाकी के जो अपराधों का वृक्ष है वो इसी बीज से निकलता है। 10 अपराध नहीं, 10वां अपराध महाराज थे, not 10 offense but the 10th offense. 10th, yes. 10th one, not 10, 10th. Dhanyavad. So the
let's consider very carefully what this 10th offense is, and we will also read some commentaries on this 10th offense from Srila Jiva Goswami and Srila Sanatana Goswami from his Hari Bhakti Vilas. So, yeah. तो अब हम इस 10वें नाम अपराध के विषय में चर्चा करेंगे थोड़ी, और उसमें जीव गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी की जो टीकाएं है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्रुते अपि नाम महात्म्ये यः प्रीतिरहितः अधामः ओ नरः अहं ममादि परमो namni sopyaparaधकृत्. You all know the formulation of this offense, but still let's consider very carefully. Shrute api nama mahatmye yaha. The one who, even though api has heard many times the glories of the holy name, nama mahatmya, but still he is priti rahitaha. Still he remains without priti, without love towards the holy name. Such adhamaha, very low, fallen person, or sometimes in some versions of this verse, there is simply naraha, without any, just a human being who is without priti towards the holy name, even though he has heard the glories of the holy name. Still he is aham mamadi paramaha. He is considering himself as parama, as the most important person in the creation. And you have to make it shorter so that you translate. Okay, fine, sorry. It's a big chunk. Okay. So महाराज जी बता रहे हैं कि जो श्लोक पढ़ा महाराज जी ने हरि भक्ति विलास से कि 10वां जो अपराध वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन महाराज जी उसे थोड़ा सा हमें समझा रहे हैं कि चूंकि हम इस भगवान के दिव्य नामों को जानते हैं या भली भांति समझते हैं, लेकिन और उसे जपते भी है, लेकिन फिर भी कोई प्रीति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है भगवान के नामों में। और ये प्रीति उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि अपने आप को स्वामित्व या प्रभुत्व जो मानते हैं इस भौतिक जगत को में जीते समय, तो वो एक महत्वपूर्ण कारण है। Namni sopyaparaधकृत्. Such a person, he is committing aparadh. So the most important line in this verse, aham mamadi paramaha. I am in the center of this creation. Aham mamadi paramaha. तो हम अहम ममिति का जो भाव है, उस भाव के चलते हमें भगवान के दिव्य नामों से कोई आसक्ति या प्रेम नहीं होता है, और इस वजह से ये अपराध मूलतया होता है। Srila Jiva Goswami gives a very beautiful commentary to this verse. श्रील जीव गोस्वामी बहुत ही सुंदर टीका किए हैं इस श्लोक पर। Yataha aham mamadi paramaha ahanta mamata adi ekatat pariyena tasmin anadaravan ityartaha. He says that if somebody has this attitude, egocentric attitude, I am in the center, I am the most important person, everything else is secondary, aham mamadi paramaha. It basically means ahanta mamata adi ekatat pariyena. It basically means that one is completely absorbed in this conception, me and mine, I and mine. So he becomes anadaravan. He becomes devoid of respect to the holy name. तो इस श्लोक में ये बताया गया है, टीका में बता रहे हैं स्वामी पाद की, जब हमारा ये अहम ममिति भाव बनता है या होता है और हम ये सोचते हैं कि मैं ही या पूरा अपने आप को केंद्र बिंदु में रख के इस भौतिक जगत में हम जीते हैं, तो ये भाव बन जाता है कि मैं ही भोक्ता हूँ या स्वामी हूँ। तो इसी से
लगभग एक प्रकार से भगवान के दिव्य नामों के प्रति कोई आदर या प्रेम नहीं जागृत होता। So basically, Srila Jiva Goswami explains that if we maintain this attitude, then inevitably what will happen will become anadaravan. It means that we will be lacking the respect, we will be lacking the proper attitude, we will become very obnoxious in regard to other people and in regard to the holy name. And okay. So श्रील जीव गोस्वामी ये बताते हैं कि इस भाव के चलते हम हरि नाम के प्रति हमारा आदर नहीं रहेगा, हम अनादर करेंगे हरि नाम का, और हरि नाम के साथ साथ इस भौतिक जगत के संसार के सारे जीवों के प्रति भी हमारा ये भाव बन जाएगा। We may not show it externally, but internally there will be this attitude. You know, we will not be able to really manifest respect toward other people and toward the holy name. And this will be a great aparat on our side. तो एक प्रकार से हम हो सकता है कि इसे बाह्य हमारे व्यवहार में हम इसे प्रदर्शित ना करें, लेकिन अंदर से हमारा भाव तो यही बनता जाएगा, जहां पर हम इस संसार के अन्य जीवों के प्रति और फिर परिणाम रूप हरि नाम के प्रति हम आदर नहीं करेंगे और हमें कोई प्रीति नहीं होगी। We all know that when somebody is very egocentric, always thinks about himself, you know, he inevitably will commit aparats towards other people because of his absorption in himself. तो जैसे हम जानते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपना सोचता है या अपने विषय में ही सोच के समझ के अपने आप को अति ज्यादा महत्व देते हुए जब वो चलता है, जीता है, तो वो अपने आप में ही अन्य जीवों या अन्य लोगों के प्रति अपराध कर देता है। And Srila Sanatana Goswami, in his commentary to Hari Bhakti Vilas, he explains several meanings of this particular verse, which are very important for us to understand how to counteract this offense. श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में काफी श्लोक लिखे हैं या काफी टीकाएं लिखी है इस अपराध के ऊपर कि किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। First of all, he explains what does it mean priti here, yah priti rahitana raha, or adhamaha. What does it mean not to have love to the holy name? तो सबसे प्रथम सनातन गोस्वामी इस विषय पे चर्चा करते हैं कि प्रीति का मतलब क्या है, या भगवान के नामों में प्रीति न होना उसका मतलब क्या है। Because one can wonder, you know, how I'm just an sadhaka, I'm an aspiring devotee, I'm just a beginner. How all of a sudden you expect from me to have priti, love for the holy name? Priti is a very high achievement. What does it mean here? That, you know, if I don't have priti, it means that I am a paradi, you know, but priti is supposed to be achieved by the chanting of the holy name. So how can I achieve priti if I don't have priti? So that's the problem which Sanatana Goswami explains. तो श्रील सनातन गोस्वामी इस परिस्थिति पे बात करते हैं कि हम तो साधक है या हम अभी नव सिखिया भक्त है, अभी अभी प्रारंभ हुआ है हमारा आध्यात्मिक जीवन, और हमें तो प्रीति है नहीं होली नेम भगवान के दिव्य नामों के लिए, और ये प्रीति कैसे प्राप्त करना है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। और फिर ये भाव भी बनता है कि मेरे पास तो प्रीति है नहीं, तो क्या मैं प्रारंभ से ही अपराध कर रहा हूँ हरि नाम के चरणों में। तो ये सारी अवस्थाएं बन जाती है एक साधक के जीवन में। So he says, namni pritihi shraddha bhaktihi va. The priti towards the holy name means shraddha,
the faith in the holy name, or bhakti towards the holy name. It basically means respectful attitude towards the holy name, not love in a proper sense of the word. तो श्री सनातन गोस्वामी इसका उत्तर में कहते हैं कि प्रीति हरिनाम के लिए प्रीति होने का प्रारंभिक अर्थ है कि हमें हरिनाम के लिए रिस्पेक्ट, जैसे कहते हैं, आदर हो और श्रद्धा और भक्ति हो। हम भगवान का जो नाम ले वो आदर से ले, श्रद्धा और भक्ति से ले। So first thing which we should understand is that with great respect we should take to this practice. This practice itself should be the object of our respect. We are doing it in a very respectful way towards the holy name. तो हमें पहली बात ये समझनी होगी कि हम जब जप करते हैं, ये पूरा आध्यात्मिक जीवन जो एक प्रक्रिया के समान है, इस पूरे आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया को हमें गंभीरता से लेना है और आदर पूर्वक लेना है। And we all know that if we respect somebody, then we first think about this person whom we respect, and then only we think about himself. Like, for example, if we respect somebody, we will let him go first instead of us going first. So respect means holy name is first and I am the second. I am not the first. तो आदर देने का मतलब या भाव ये है कि जिस प्रकार से हम हमारे निजी जीवन में यदि किसी को आदर देते हैं तो हमारा सहज भाव बनता है कि उन्हें पहले हम हर एक कार्य करने देते हैं, या वे पहले आते हैं, हम बाद में आते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान के दिव्य नामों का आदर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में भी या हमारे जीवन में भगवान का नाम या भक्ति या आध्यात्मिक जीवन पहले आएगा और हमारा विचार जो है वो बाद में आएगा। And then Srila Sanatana Goswami explains this line, Aham Mamadi Paramaha. What does it mean to be in the center? अब आगे श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वास्तविक रूप में अपने आप को केंद्र बिंदु में रखने का क्या भाव है। He says that he gives several meanings to this line, and all meanings are very relevant to us. तो सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे इस पे अपनी टीका में अलग-अलग मतलब बताए हैं, और वे सारे जो मतलब है या कारण है वो हमसे बहुत ही संबंधित है। He says the first meaning is that when we chant the holy name, or not only when we chant the holy name, but in general in our life, we give the first importance to Vishaya Bhoga, to our sense gratification. तो वे बताते हैं कि एक कारण तो ये है कि हम हमारे जीवन में भगवान के नाम के से अधिक महत्वता विषय भोगों को देते हैं। Adi Shabdena Vishaya Bhoga Adikam Cha Eva Paramam Pradhanam. It basically means that I'm constantly concerned how I will enjoy. And while we're chanting the holy name, we can notice that sometimes, my mind starts fantasizing or thinking, how I will enjoy when I finish the holy name, how I will enjoy when I get my vacation, how I will enjoy when I, get rid of this problem. So that means that we're always dwelling on this Vishaya Bhoga, how I will enjoy. तो इस विषय में गहराई से समझते हुए बताते हैं कि जब हम भगवान का के नामों का जप करते हैं या और भी कोई कार्य करते हैं तो हमेशा एक बात हमारे मन में चलती रहती है, मैं किस प्रकार से भोग करूंगा, या इस भौतिक जगत को या इस जीवन में कैसे मैं भोग करूंगा, कैसे मैं भोग करूंगा। तो यहीं से ये बात स्थापित होती है या प्रमाणित होती है कि हम इस भौतिक जगत में भोग करने के भाव से है, या हमारा ये भाव है मैं किस प्रकार से इस भौतिक जगत को अत्यधिक भोगूं। Yeah, we all know we chant the holy name and then we think what will I eat for breakfast today? So which idli I will take and what dosa I will take.
So महाराज जी कह रहे हैं कि ये वास्तविकता में हम सब अनुभव कर सकते हैं। हम जब जप करते हैं तो जप करते वक्त ये भाव आ सकता है मन में, या विचार आ सकता है कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, या मैं इडली खाऊंगा या डोसा खाऊंगा। So and that's one thing, and we have to be very careful. And it basically means that while we're chanting the holy name, and if our thoughts by some chance start dwelling on these subject matters of Vishaya Bhoga, we should turn them away from this Vishaya Bhoga and again concentrate on the holy name. तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम जप करते हैं और हमारा मन या हमारी इंद्रिया जब इस विषय भोग में जाती है या प्रायः जाती रहती है, तो हमें उसे खींच के लौटाना है और भगवान के दिव्य नामों में लगाना है। Or Sanatana Goswami gives another interpretation of this Aham Mamadi Paramo. He says that when we chant the holy name and we have this egocentric attitude, when myself, my, me and my is in the center, then it could manifest in 3 different ways. तो सनातन गोस्वामी एक अलग नजरिया व्यक्त करते हैं या भाव बताते हैं इस अहम ममेति भाव के विषय में, और वो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि वो 3 प्रकार से प्रकट हो सकता है। He says the first is the attitude, look, I'm chanting so many holy names, and I'm chanting, I am such a good chanter. I will chant 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs, or maybe 16 rounds. But this attitude, this is again Aham Mamadi Paramo. I'm not thinking about the holy name. I'm thinking about myself who is chanting the holy name and how much I chant, how good I am. तो ये पहला प्रकार इस प्रकार से बताते श्री सनातन गोस्वामी कि एक साधक या एक भक्त जो जप करता है वो सोच सकता है कि देखो मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतने नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सीधी सी बात है कि हम हमारे विषय में ही सोच रहे अभी भी, और भगवान नाम के विषय में नहीं सोच रहे। हम ये सोच रहे कि मैं इतना जप कर सकता हूँ या मैं इतना जप किया। Or even Solamala. Sometimes we are very proud that I'm chanting 16 rounds. No problem. और कभी-कभी इस बात का भी हमें अहम हो जाता है कि मैं 16 माला कर रहा हूँ या 16 माला अच्छे प्रकार से कर रहा हूँ। He says the second way of this attitude is that Maya Samaha Nama Kirtana Paraha Anyaha Kaha. He says, who is better than myself is devoted to this Nam Kirtan. Who is better than myself in this regard? दूसरा भाव इस प्रकार से बनता है कि वैसे महाराज जी ने अच्छे से समझा ही दिया कि मेरे से अच्छा या मेरे से ज्यादा आसक्त कौन है इस नाम कीर्तन में। Nama Kirtana Paraha Anya Kaha. Who is better than me? I'm always chanting the glory of the holy name. I'm preaching the glory of the holy name. So that's another manifestation of this subtle offense. इस अपराध का ये दूसरा विस्तार है कि जहाँ पर साधक या भक्त सोचता है कि मेरे से बड़ा नाम प्रेमी कहिए कौन हो सकता है, क्योंकि मैं दिन भर नाम लेता हूँ और नाम का प्रचार भी करता हूँ, तो मेरे से बड़ा कौन है। And the third way of how this egocentric attitude can manifest in our chanting of the holy name, we start thinking, my tongue is the best chanter of the holy name. और तीसरा इसका विस्तार है कि जब हम ये सोचना शुरू कर दे कि मेरी जिह्वा जो है वो सबसे अच्छे से भगवान का नाम ले सकती है या भगवान का नाम लेती है।
look how nicely I'm chanting the holy name, how nicely I'm, pronouncing the holy name. Nobody else can pronounce the holy name better than myself. जब हम ये सोचते हैं कि देखो मेरी जीवा से कितना स्पष्ट उच्चारण हो रहा है, कितने अच्छे से और कितने मधुरता से मैं भगवान का नाम जपता हूँ, और कोई मेरे से अधिक या मेरे से अच्छे से तो कोई और नाम जप ही नहीं सकता और ना ही उच्चारण कर सकता है। So human beings are very interesting creatures. They always proud of something. So if they cannot be proud of some material achievement, they will start becoming proud of their chanting of the holy name. महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो बहुत ही रसप्रद जीव है या प्रकार है, एक प्रकार से कि उन्हें कभी हमेशा कुछ न कुछ बातों में अहम लेने की या दिखाने की आदत रहती है। तो अगर भौतिक ताक या भौतिक विषय का अहम नहीं होगा तो आध्यात्मिक विषय का अहम होगा या आध्यात्मिक जीवन का अहम होगा। Yes, sometimes we have nothing to be proud of, but then we start the spiritual life and we become very proud about this. तो कभी-कभी हो सकता है हमारे पास अहम दिखाने या लेने के लिए कोई भी चीज नहीं है, लेकिन फिर आध्यात्मिक जीवन में जब हम आते हैं तो हम इस बात का भी अहम रख लेते हैं कि मुझे किसी बात का अहम नहीं है। So basically, these three attitudes, three very proud attitudes towards the holy name, they means, some are for Goshtianandi, Pracharakas, those who are preaching the glory of the holy name. They can become deviated from the glory of the holy name and become concentrated on their own glory. Or Bhajananandi also can become deviated from the glory of the holy name and become concentrated on their own glory. तो ये तीन हमने जो चर्चाएं की तीन प्रकार से, तो उसमें दोनों प्रकार के जो भक्त है गोष्ठानंदी और भजनानंदी, उन दोनों के लिए दिक्कत है कि हो सकता है कि वो अपने अपने भजन और अपने साधना, अपने प्रचार से हट के या भगवान के नामों को महत्वता न देते हुए अपने आप को महत्व ज्यादा दे देंगे। So the first attitude in Sanskrit is aham bahutara nama kirtaka. I am chanting more than other people. I am chanting more than other people, and sometimes we can see, some devotee ask, how many rounds do you chant? And he's not really interested in how many rounds do we chant. He's interested to say that he's chanting more than us. तो कभी-कभी ये देखा गया है कि भक्त के समाज में पूछते हैं कि आप कितना जप करते हैं, तो या कितना माला करते हैं, तो जो पूछते हैं उनका ये वास्तविक भाव नहीं होता हम कितनी माला करते हैं, बस उन्हें ये प्रस्थापित करना है कि वे हमसे ज्यादा जप कर रहे हैं या सबसे ज्यादा जप वही करते हैं। And the second attitude, Maya Sama Nama Kirtana Paraha Anyakaha. And the third attitude is Madhya Jihvadinam Eva Nameti Adikam Eva Paramam Pradhanam. My tongue is the greatest chanter of the holy name. Chanting is under control of my tongue. I am chanting the holy name myself. That's another offense which we can commit. और दूसरा और तीसरा प्रकार जो महाराज जी ने या सनातन गोस्वामी ने बताया कि मुझसे बड़ा नाम प्रेमी या नाम प्रचारक या नाम जपने वाला और कौन है, और तीसरा प्रकार जो बताया कि एक रूप से ये भाव आ जाता है कि भगवान का दिव्य नाम मेरे कंट्रोल में है, मेरी जीवा के शरण में या कंट्रोल में है, मैं जब चाहूं स्पष्ट और अच्छे से नाम ले सकता हूं। We should always remember then, in chanting of the holy name cannot manifest within our material senses. Atak Shri Krishna Namadina Bhavit Grahyam Indriya Sevan Mukhehi Jihvadu Swayameva Spuratadaha. The holy name is manifesting himself by his own sweet will within our senses, not that we are chanting, I am chanting, my tongue is chanting. तो महाराज जी काफी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भगवान का नाम हम इस भाव से यदि ले रहे हैं कि मैं जप रहा हूँ और मैं जब चाहूँ तब जप सकता हूँ,
तो ये तो गलत भाव है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम अपने आप प्रकट होता है एक साधक, एक भक्त के जीवन में या एक भक्त की चेतना में। ऐसा नहीं है कि हम नाम ले रहे तो नाम प्रकट हो जाएगा, वे अपने आप अपने इच्छा से प्रकट होता है। So this is the description, and we, by having this description, we can all understand that we are committing this offense one way or another, sometimes very grossly, sometimes in a more subtle way. तो एक प्रकार से हमें ये सोचना होगा कि ये शास्त्र में सारा वर्णन दिया है, और इस वर्णन को पढ़ के समझ के हमें समझना होगा कि हम ये अपराध कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कर रहे हैं। So Srila Bhaktivinoda Thakur in his Harinam Chintamani, he gives the remedy against this offense. श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि में लगभग एक प्रकार से इसका तोड़ देते हैं या इसका रास्ता दे रहे हैं, हम किस प्रकार से इस अपराध से बच सकते हैं। He says that first of all, we must surrender to the holy name. It basically means again and again we have to remind ourselves that holy name is not different from Krishna himself. तो वे समझाते हैं कि सबसे पूर्व में हमें ये समझना होगा कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और इस प्रकार से हमें भगवान के नाम की शरण लेनी होगी। It basically means again that while we're chanting again and again, we have to say, Krishna, I'm yours. I completely depend on you. If you wish, I may stay here. If you wish, I may go. I may leave this body just this very time. This attitude of complete surrender to the holy name is extremely important to counteract this offense. तो इस अपराध से बचने के लिए जो पूर्ण रूप से शरणागति भाव होना चाहिए भगवान के नामों में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शरणागति भाव को इस प्रकार से बता रहे हैं कि हम जप करते वक्त ये भाव रख सकते हैं कि हे प्रभु, मैं पूर्ण रूप से आपका हूँ, आप में समर्पित हूँ। यदि आप चाहे तो मैं इस शरीर में रह पाऊंगा और समय, और यदि आप चाहे तो मैं तत्काल ये मुझे शरीर छोड़ना होगा। तो इस भाव को धारण करते हुए भगवान के नामों को जपना अति आवश्यक है। And we all know that this mood of surrender, complete surrender to the holy name or to Krishna, who is non-different from the holy name, is expressed by Chaitanya Mahaprabhu in the third verse of Shikshashtakam, Trinada Piso Nichina Taror Api Sahishnuna Amani Namanadana Kirtaniya Sadari. तो ये जो भाव है वो भगवान का पूर्ण शरणागति प्राप्त करना या लेना भगवान के दिव्य नामों में और भगवान के लिए, तो इस भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के 3रे श्लोक में भली भांति समझाया है। And therefore, in this shlok, Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Amani Namanadana, I have to always train myself, train my mind, train my heart in giving respect to other people and without expecting respect to myself. तो इस श्लोक में त्रिनादपि सुनीचने श्लोक में महाप्रभु ये बताते हैं कि अमानी न मान देना, हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना होगा कि हम सभी को हर अवस्था में आदर दे, और हमारा स्वयं का आदर सामने हम ना आशा रखे। इस भाव से हमें सदैव सभी लोगों को आदर देना सीखना होगा। And in this way, we will be able to train ourselves towards the holy name also, because if we respect all other people, whoever we meet, whether he is senior or junior to me, if this attitude of respect will be there, then the same attitude of respect will be also there while we're chanting the holy name. तो हम जब हर एक व्यक्ति को आदर देने की आदत डाल देंगे, चाहे हमसे वो जूनियर है या सीनियर है, कोई भी व्यक्ति हो, जब भी हम आदर देते हैं तो ये एक प्रकार से हमारा भाव या हमारी आदत बन जाएगी, और फिर हम भगवान के दिव्य नामों के लिए भी इसी भाव को धारण कर लेंगे। Therefore, also Srila Rupa Goswami in his Upadeshamritam, he says that the remedy is to chant the holy name, but not anudinam every day, but not just chant the holy name
every day, but with respect. रूप गोस्वामी भी अपनी टीका में कहते हैं कि हमें केवल भगवान के नामों को जपना नहीं है या प्रत्येक दिवस अनुदिन जपना नहीं है, रोज नहीं जपना है, लेकिन भाव यह है कि रोज केवल नाम नहीं लेना है, लेकिन भगवान का नाम पूर्ण आदर से लेना है. And then the other remedy which Bhaktivinoda Thakur says, first, of course, is this mood or attitude of surrender or humility while chanting. And the second remedy, most important remedy, is sadhu sangha. तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने पहले तो ये कहा कि भगवान के दिव्य नामों को पूर्ण आदर से और शरणागत भाव से लेना है, और दूसरा रास्ता वे बता रहे हैं, दूसरा तरीका बता रहे हैं, वो है कि साधु संग. Again and again, hearing the glories of the holy name, we will gradually turn away our thoughts from I and mine, and in this way, this transformation or surrender to the holy name will take place. तो भगवान के दिव्य नामों के विषय में क्या महिमा हमें बार बार श्रवण करनी होगी, और हम धीरे धीरे ये श्रवण करते करते हमारा जो ममत्व है या अहमत्व है, उस भाव से हम निकल के हम भगवान के दिव्य नामों के प्रति हमारा आदर और समर्पित भाव बढ़ते जाएगा. In other words, we will never be able to surrender to the holy name in complete sense of the word unless we surrender to a saintly person who is propagating the holy name, who is giving us holy name, who is preaching the glories of the holy name. एक प्रकार से इसका अर्थ ये भी है कि जो व्यक्ति या जो साधु संत जिसने हमें नाम दिया, जो नाम का प्रचार कर रहे हैं, जो नाम को ले रहे हैं और अन्यों को भी ये सिखा रहे हैं, तो जब तक हम वैसे शुद्ध भक्त की शरण नहीं लेंगे या पूर्ण रूप से उन्हें शरणागत नहीं होंगे, तब तक हम भगवान के नामों का भी शरण नहीं ले पाएंगे. So even if now we don't have complete faith in the holy name, at least we should have complete faith into the sadhu who is preaching the holy name. And from this shraddha or priti towards this saintly person, the shraddha or priti towards the holy name will appear. And we will step aside from the center of our life and put in the center of our life Krishna in the form of the holy name. तो अभी तो ये हाल हमारा है कि हमें भगवान के नामों में पूर्ण श्रद्धा या प्रेम नहीं है, लेकिन वो साधु या वो शुद्ध भक्त जो नाम ले रहा है, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम लाने से या होने से हम धीरे धीरे अहम महत्व वाले भाव से निकलकर इस भाव में स्थित हो जाएंगे कि हम धीरे धीरे भगवान के नाम और भगवान के नाम भजन में भी हमारा प्रेम और हमारी आसक्ति और हमारी अनुरक्ति बढ़ने लगेगी. Thank you very much. Thank you, Padma Mali Prabhu, for your translation. Thank you for your listening. महाराज जी, आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने धैर्यता से महाराज जी को सुना. Okay. Thank you so much. Any questions? कोई questions है? कोई प्रश्न है? तो यदि आज के विषय में किसी भक्त के प्रश्न है तो तुरंत हैंड रेस कर सकते हैं. सीता समर्पण माता जी, अनम्यूट करके बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. और क्वेश्चन करने के पहले बार बार आप सभी वैष्णव भक्त और महाराज जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम. मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न गूंजता रहता प्रभु जी कि मैं बहुत ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल जो हमारे काउंसलर जो कहते हैं बिल्कुल उसी नियम के अनुसार चल रही हूँ, दीक्षित भी हो गई हूँ, परंतु अंदर जैसे अपन हरि नाम जपते हैं, हृदय में चित्र भी यानी प्रभु जी का नजर आता है, लेकिन जैसे गुरुदेव हर पल दिमाग में घूमते हैं या जैसे को काउंसलर हमेशा अपने दिमाग में घूमते हैं, तो क्या ये अपराध है प्रभु जी? हरे कृष्ण. So Maharaj, Mataji is making this question that while chanting, she always remembers the spiritual master and also the. No, this counselor. Is not aparad. This is not aparad. Don't worry.
In fact, this is the proper way, the proper prakriya of chanting the holy name. First, we have to chant the holy name as if we're sitting in front of our spiritual master. And while chanting the holy name as if we're sitting in front of spiritual master, we're making a lot of advancement. So don't worry. So माता जी, अपराध नहीं है, क्योंकि जप करने के पहला भाव या एक अवस्था ये भी है कि हम हमारे गुरु महाराज के वास्तविक सामने बैठ के जप कर रहे, इस भाव से जप करना है। यदि जप करते वक्त आपको ये भाव है कि आप गुरु महाराज का दर्शन कर पा रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी अपराध नहीं है। मुरली मोहन प्रभु। Thank you very much, Maharaj. It was such a wonderful explanation on this 10th verse. We must have read many times this verse, but the explanation from your holiness was really wonderful. This is not a question, but this is just a realization. I was feeling that we must have read Hari Bhakti Vilas one time or many times, but I feel to understand, we just don't have to read, but we need some explanations from, directly from the Elevated Souls Association of the Devotees. And we also take from YouTube, we hear holy name from devotees on YouTube and also on Zooms and also. But I feel, much better association is on YouTube than reading, and much better association is directly than from YouTube and all. We must, we'll be very fortunate if we associate directly and take associations and especially learn such things from, elevated devotees. It was really very wonderful explanation, and we have read it, but the real essence we got it right now from your, this thing was really very wonderful. Thank you very much for such explanations. Just little thing commenting on what you said. While we're reading the book, we can only understand what we already know on our experience. When we read the book, we filter out the content of what we read, and we only understand what we already know, more or less, and we get the confirmation from the book. But when we listen somebody else explaining this, then something new can come to us. So I completely agree with you that we should listen the explanations which are given by those people who have more experience than ourselves. And while sitting in front of the computer, we can become a little neglectful. We are not really so attentive and so respectful. While when we are meeting with somebody, with a sadhu in person, then naturally the attitude of respect is there, and therefore the effect or the result of hearing is stronger. I completely agree with you on these points. Thank you. Chitta Harisham Prabhu. Hare Krishna, Guru Maharaj. My question is that when we used to chant, we always remain in a relative platform, like circumstance and all the thing. So Maharaj, my question is that how to make the absolute vision while chanting, like I just have to only chant and hear, because circumstance and all the relative things comes in a mind, and like it's like a sea wave like of situation. You cannot really abstract yourself completely from the circumstances, and therefore even Vishwanath Chakravarti Thakur in his Madhurya Kadambini, he makes a very interesting and beautiful and solacing point. He says that even on the stage of Nishta, when we are completely surrendered, still the mind, he says, even in the, not even on the stage of Nishta, even on the stage of Ruchi, the mind will slip away and start thinking about something else without us noticing it.
even on the stage of Ruchi, which is a very highly advanced stage. I don't know if this should be translated or not. This. So Should I- चित्तहरि श्याम प्रभु का प्रश्न है कि हम जब जप करते हैं तो हमें ये सारी बातें पता होती है, लेकिन फिर भी जो वास्तविकता है हमारे अगल बगल में, जो परिस्थिति अवस्था है, वो हमारे मन को हावी कर लेती है। तो वो पूछ रहे महाराज जी से किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। तो महाराज जी बता रहे हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हम जब रुचि के स्तर पे भी चले जाएंगे तो भी ये संभावना रहती ही है कि हमारा मन जो है वो जप करते वक्त या भजन करते वक्त थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, जो वास्तविक परिस्थितियां है उसमें जाएगा। So, you know, we should not expect something unrealistic from our mind. Our mind is such now that it will slip away, it will concentrate on something else, whether we want it or not. The only thing which we have to do is, as soon as we notice that the mind is thinking about something else, we have to bring him back with this respectful attitude towards the holy name. तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम जब जप करते हैं, भजन करते हैं, तो पूरी प्रक्रिया में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मन कभी नहीं भटकेगा, कभी इधर उधर नहीं होगा। हमें केवल एक कार्य करना है कि जब भी हमें पता चलता है कि हमारा मन भटका है तो उसे तुरंत ही वापस लाना है। भगवान के दिव्य नामों के प्रति पूर्ण आदर और प्रेम रखते हुए हमें हमारे मन को तुरंत ही खींच के वापस लाना है। And then Vishwanath Chakravarti Thakur says, on the stage of asakti, our mind will also slip away unnoticeably for us. वे आगे ये बताते हैं कि आसक्ति के स्तर पर भी हमारा मन भटकेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा या हमें उसकी भनक भी नहीं लगेगी। But on the stage of asakti, the mind unnoticeably for us will slip away and start thinking about God. Slip away from other subject matters and think about God. लेकिन उसमें भिन्नता ये रहती है कि आसक्ति के स्तर पर हमारा मन तो भटकेगा, लेकिन वो अन्य विषयों से भटक कर भगवान के विषय में या भगवान के बारे में स्मरण में ही लगेगा। As much as now, you know, all of a sudden we start thinking about something else, even though we want to think about God, on the stage of asakti, even though we want to think about something else, the mind will keep on thinking about God. तो अभी जो हमारी अवस्था है कि अभी हम चाहते हैं भगवान के विषय में सोचने के लिए, लेकिन फिर भी हमारा मन कहीं ना कहीं चला जाता है भटक के। तो आसक्ति के स्तर पे ये होता है कि हम अगर किसी अन्य विषय में भी सोचना चाहेंगे, फिर भी हमारा मन भगवान के विषय में सोचेगा। So you should wait till you reach the stage of asakti, then this problem will be solved. तो महाराज जी कह रहे चित्तहरि श्याम प्रभु से कि आप थोड़ा रुकिए, आसक्ति के स्तर पे जब तक आप पहुंच जाएंगे फिर आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ब्यूटीफुल आंसर महाराज। अनंत शेष प्रभु अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। Hare Krishna, Maharaj. Please accept my humbles. Hare Krishna. Thank you for the nice explanation. Just two doubts were in my mind. The first one is you mentioned about the commentaries from Sanatan Goswami and Jeev Goswami. Where can we find this Jeev Goswami commentary? It was Jeev Goswami is in Bhakti Sandarbha. In Okay. Bhakti Sandarbha, he explains the offenses of the holy name, and Sanatana Goswami in Hari Bhakti Vilas. Thank you much. Just one another query, like the remedy for this 10th offense which you have mentioned is about like to be develop the respectful attitude for the holy name, to develop more respect. That's one of the points which you're mentioning. So there are two different things. One is chant respectfully, and another is like chant incessantly or chant constantly. So at the end, like Sanatan Goswami also speaks about 10th offense, and then this Avishranta Prayuktani, constant chanting. So which one is like more important? Like
See, they are very intimately interconnected. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Samanina mananina kirtaniya sadahari. You will always feel that the holy name is kirtaniya. It's worthy of being chanted. Literally in Sanskrit, kirtaniya means it's something which is worthy of being chanted. You will only be able to have this attitude that I want to chant it always, only if you are respectful, amanina manadena, if you don't expect respect to yourself. Otherwise, you will chant the holy name, you will try to chant it incessantly, and then inevitably you will try to derive some benefit for yourself from this chanting. Others should respect me because I'm constantly chanting the holy name. So, to be able to Avishranta, to this chant the holy name constantly, you have to also work on developing this respectful attitude towards others, humble attitude. Thank you. So, Maharaj, I think the time has slipped away, and you would be having other schedule also. I would like to express my sincere apologies for all the shortcomings and for all the incompatibility in translating your message. You very accurately translated everything. I didn't notice any mistakes, probably because I don't know Hindi that well, but so my apologies again, Maharaj, at your. No, thank you very much. And again, my gratitude towards Srila Lokanath Maharaj. Thank you very much, Maharaj, for engaging me in this way. And I heard that you're planning to come. Please come. I'll be happy to see you. We're neighbors now. Thank you. We'll have a walk to a place nearby. So सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप उच्चारण करके हम महाराज जी का परंपरागत पद्धति से आभार व्यक्त करते हैं. So let us all chant Hare Krishna Mahamantra once to express our sincere gratitude and appreciation for His Holiness Bhakti Vigyan Goswami Maharaj. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. And also we would like to request Your Holiness to kindly keep showering your blessings and by your association in coming days also, Maharaj. We would be more than happy to have your association again and again, and to get enlightened on such subtle and important subject matters of chanting the holy name as you beautifully explained today. Thank you again, Maharaj, for your association and mercy. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Param Puja Srila Bhakti Vigyan Goswami Maharaj ki jai. Param Puja Srila Lokanath Swami Maharaj ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnava